So hello everyone and welcome to Career Launcher. So I hope you are aware that every Sunday at 8 p.m. we are having static GK discussion, and today is Sunday and it is almost 8 p.m. So we are here to begin today's class where we'll be discussing the static GK we have discussed in the past also about the world geography, the previous year question of MH set. And today also we are going to discuss about geography and then we will move further. Okay, so in the last class we were here somewhere. पिछले क्लास में हम लोग कहीं पर यहाँ थे and we were talking about the longest river of the world. So longest river of the world कौन सी है? Can anyone tell me? Yes, good evening. Is the class fine or is it getting stuck? Is it fine? Hopefully. Getting stuck. Is it fine? अब ठीक है? पता नहीं शुरुआत ही खराब हुई. I think now it is fine. Hopefully. So longest river of the world we had discussed is Nile River, है ना? And it is longest means lengthwise, है ना? But when I'm asking from the perspective of water content, है ना? So volume of water, or what we call it as largest river of the world, then the answer would be Amazon River, right? Yes. Then that would be the answer. So D is the right answer. Okay, so we had discussed about it, that Nile River. So one part starts from Lake Victoria, White Nile it is called, WN, and in Ethiopia Blue Nile starts, BN, and then it meets in Khartoum, Sudan, and it goes like this. This is called as Nile River and it falls in Mediterranean Sea. ठीक है? है ना? So this is longest river volume wise. ठीक है? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसे जाता होगा. ये DRC में नहीं जाता, ऐसे, हाँ, like this. ठीक है? And largest river of the world somewhere here is Amazon River, है ना? देखो जो इक्वेटर के पास रिवर होगी ना उसमें वाटर कंटेंट बहुत ह्यूज होगा. Because you are why the reason, can you please tell me? इक्वेटर के आसपास क्या होता है? एवरी डे कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, ऑलमोस्ट एवरी डे इन द कन्वेक्शनल रेनफॉल. फिर स्टक हो गया उत्तरी. इज द स्लाइड स्टक अगेन? फिर स्टक हो गया उत्तरी. इज द स्लाइड स्टक अगेन? I think now it is fine. I don't know what happened today. Okay, so largest river. So whatever is the river around equator, you will find more water content because of convection rainfall. And there's a term like called as 4 o'clock shower. So every day around 4 o'clock, you will find rainfall happening because of heating of the earth, convectional rainfall. Okay, that's why Amazon River is the largest river water content wise. Water content wise. Okay. The second largest river water content wise is Congo River. This is Congo in Democratic Republic of Congo. So after Amazon, second largest river water content wise, volume wise, है ना? Water volume wise. And a very famous GK question. अरे यार ये क्या हो रहा है? The slide is stuck, right? Is it fine? Is the class fine or is it still getting stuck? पता नहीं क्या हो गया आज. I don't know. So we were talking about this. चलो मैं फिर से बताता हूँ.
देखो, so this is Nile river. We have discussed White Nile and Blue Nile. White Nile and Blue Nile becoming Nile river. So longest river of the world. Second and largest river is Amazon. I have told you Amazon, largest river of the world, because it is actually on the equator. ये screen पर आ क्यों नहीं रहा यार? What happened? Why it is not showing in the screen? Okay, so this is equator. Okay, and ये तो रुक रुक के क्लास चल रही. Is it fine? I'm not able to see. Is the class fine? Like, it's getting stuck. Acha, hold on, please. Please wait. I'm disconnecting. Okay, please wait. I'm disconnecting the and joining it again. Okay. Okay, so now I believe that things are better. Okay, so now I believe that things are better. Okay, so now I believe that things are better. Okay, the slide is visible. I hope so. Okay, so now I believe that things are better. Okay, the slide is visible. I hope so. Yes, fine. Fine. चलो आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ठीक रहेगा. So we are talking about this, है ना? So this is the longest river, and I've told you equator में ना rainfall होती है every day. What we call it as convectional rainfall. This rainfall happens every day. Okay. And since this convectional rainfall happens every day, actually, so you will find here like around equator heavy rainfall, and because of which the rivers contain huge amount of water. So largest river of the world is Amazon, and second largest river is Congo river. Second largest. When it comes to volume wise or water content wise, that is what you should be knowing. Okay, I hope it is clear. Is it clear till now? Hopefully. Okay. And one more important geography new question that is being asked is, which river cuts equator twice? So Congo is a river which cuts equator twice. Okay. That is what you should be knowing. The next is, which is the largest river water content wise of the world? Now, I hope you will be able to answer this question. Yellow River, Amazon River, Mekong River, Nile River. Please answer it fast, because I believe that you all should be answering it by now. So the right answer is option B,
Amazon River is the right answer to this question. अच्छा ये Mekong River कहाँ पर है? Can anyone tell me? In which region of the world? In which region of the world you will find Mekong River? नहीं वो मिसिसिपी रिवर जो यूएस में. मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन. हैव यू हर्ड दिस? मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन. हैव यू हर्ड दिस टर्म बिफोर? वियतनाम कह सकते हो. हाँ साउथ ईस्ट एशिया में एक्चुअली मेकॉन्ग रिवर लाइज हियर. चाइना से चलती है, म्यांमार हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम सब में चलती है. दिस इज मेकॉन्ग रिवर. ठीक है. बल्कि आई थिंक ऐसे घूम के ऐसे कुछ समथिंग करती है ना. ओके दैट्स व्हाट यू शुड नो. और अमेजॉन रिवर वी हैव डिस्कस्ड. और यहाँ पर अराउंड अमेजॉन रिवर यू विल फाइंड अमेजॉन फॉरेस्ट. And these forests are called as lungs of the earth. Okay, and since these are lungs of the earth, it actually captures, it produces 20%, it is said 20% of the world's oxygen. Yes, Southeast Asia कह सकते हो. Yes, Vietnam वाले region में. ठीक है. So Mekong is there. So here B is the right answer to this question. The next is the largest delta is on which of the following river of India? Largest, this is a previous year question. CLAT 2021 asked this question. Actually, they had asked about largest mangrove forest, so the answer is same. Largest mangrove forest of the world. And this is because of the delta itself. So the right answer is, actually the answer should be Ganga Brahmaputra Delta. And what is the other name for this? What is the other name for Ganga Brahmaputra Delta? Yes, Sundarban Delta, because you will find Sundari tree here, Sundarban Delta. So the answer to the question that was asked in CLAT 2021 is the largest mangrove forest of the world. So the answer was Sundarban mangroves. Okay, that is what you should be knowing. Now, so here is Ganga River going like this. And this is, I'm sure you must be aware, Yarlang Sangpo becoming Brahmaputra, and it goes like this and it splits like this. It is called as Yarlang Sangpo. And in Assam, it is called as Brahmaputra. Okay, so it splits, and this region actually is called as Ganga Brahmaputra Delta, or what we call it as Sundarban Delta. Okay, and this region is famous for Sundarban mangroves. Sundarban mangroves. Okay, now I wanted to ask one more thing. Now, like there are rivers, like big rivers actually form delta. Form delta before meeting any big ocean or sea. Now, please tell me, if there is small river meeting the ocean which has less water content, then what is the geographical term we use when it meets the ocean or water, big water body like ocean, Bay of Bengal, or large sea? What is the term that is used? The meeting point or the meeting place between the river, the small river having less water with. Yes, Sarah Godbol, you're right. Estuary, that's called as estuary. ठीक है, yes. नहीं, tributary नहीं कहते, estuary कहेंगे. ठीक है. So basically, let's say there's a small river with having less water when it meets an ocean. So this is a river, and it is meeting a big ocean or a sea. So it directly goes and meet, and this region will be called as estuary. Okay. Now, if a river is quite big, then of course before meeting it, it splits into before meeting ocean or a sea. It meets
it splits into small streams, and these are called as, and this region that is formed is called as delta. It should have a huge amount of river water content. So if you see it in case of Ganga, Brahmaputra, Ganga mein itni sari river aati, Yamuna, Kosi, Gandak, a lot of river comes and meets, and from here Brahmaputra comes and meet, and here actually what we call it as delta is formed. That is what you should be knowing. ठीक है, so A is the right answer to this question. Tributary उसको नहीं कहते हैं. देखो, tributary क्या होता है? There's a main river that is going, and another river comes and join. For example, Ganga is flowing and Yamuna comes and joins. So Yamuna will be considered as a tributary of Ganga. Okay, that's called as tributary. Okay, na? Why does it split? जब water content बहुत heavy होता है तो एक इसमें मतलब इसको hold नहीं कर पाता है ना? Water और silt बहुत ज्यादा होता है. So meet करने से पहले वो छितरा जाती है river. ठीक है? है ना? Common sense में थोड़ा सा अगर आप लगाओगे तो समझ में आ जाएगा. Plus इस region यानी before meeting the ocean वो जो मट्टी होती है वो थोड़ा गीली मिट्टी होती है. I'm sure you must be aware. वो लूज मिट्टी होती है, इसीलिए पानी फिसलेगा, स्प्रेड करेगा. You got it? If it has huge amount of water content and before meeting the ocean or the sea, the soil is something different, है ना? It's loose. So that's why when a huge thrust of water comes, of course it will split. ठीक है, वो फैलेगा ना, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है पानी की. तो जब हेवी वाटर कंटेंट होता है तब ऐसा होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, जब आप गूगल मैप में जूम करोगे, जैसे गोदावरी रिवर है तो ये यहाँ पे जाके स्प्लिट होती है. कृष्णा रिवर है वो भी स्प्लिट होती है. कावेरी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी बनाती है. लेकिन यहाँ पे जो वेस्ट साइड में छोटी छोटी रिवर है ना, दे फॉर्म एस्चुरीज. ठीक है, स्मॉल रिवर्स व्हिच फॉल्स इन अरेबियन सी दे जनरली फॉर्म एस्चुरी, बट द बिग रिवर्स व्हिच फॉल इन बे ऑफ बंगाल मोस्टली दे फॉर्म डेल्टा. ठीक है. The next one is which of the following is called as Falcon, capital of the world? Falcon समझते हो? Falcon एक तरह की बर्ड होती है. Yes, the right answer is option C, Nagaland. Yes, Ansh, there you're right. C is the right answer. Falcon, capital of India. Next is which of the following is the largest saltwater lake in India? देखो तीन चीज पता होनी चाहिए. लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक सांभर लेक, राजस्थान. लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कहाँ है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बताओ. लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक छिलका लेक है, ओडिशा. यस, समवन रिटन ओडिशा ब्रैकिश वाटर लेक. हाँ, यस. सो ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है इन समवेयर इन द मिडिल, सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर के बीच में, समवेयर इन द मिडिल. ठीक है, सो छिलका लेक. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक छिलका लेक ओडिशा में पड़ेगा ना. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, यस, भाव्या सेठी, यू आर राइट. वोलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर. ये सब एग्जाम में पूछते हैं. दीज आर आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग. स्टैटिक जीके में अक्सर आता है. ठीक है ना. सो सांबर लेक, लेट मी शो इन द मैप नाउ. द स्टेट ऑफ राजस्थान, हियर इज सांबर लेक, है ना. लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक. दिस इज ओडिशा, दिस इज छिलका लेक. Largest freshwater lake.
The right answer is B, है ना. Next is where do you find Loktak Lake? अच्छा एक चीज और बताते हैं. Chalka Lake is also the largest lagoon in India, है ना. And what is the lagoon? You have to find out. It's a homework. Lagoon क्या होता है? Find out कीजिएगा and answer me in the comments once the class is over. You are provided a recorded video, so उसमें नीचे comment कीजिएगा. ठीक है. Next is where do you find Loktak Lake? कहाँ मिलेगा? Loktak Lake कहाँ मिलेगा? And why it is famous? Why famous? Yes. Yes, Bhavya Sethi and Geeta compose. You both are right. Manipur. Why it is famous? Yes, Ansh. भगवत शर्मा राइट. हाँ, अब बताइए कि लोकतक लेक क्यों फेमस है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दैट? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया. हो सकता है, मे बी अंश यू आर राइट, योर आंसर वुड बी करेक्ट, बट आई वाज आस्किंग समथिंग एल्स. मतलब कुछ और भी मैं जानना चाह रहा था लोकतक लेक से रिलेटेड. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नहीं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ इंडिया तो नहीं होगा, बिकॉज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज वोलर लेक. हो सकता है मे बी नॉर्थ ईस्ट इंडिया इट माइट बी द आंसर, but I wanted to ask something about it. Floating island, right? So there is only floating national park in the world, है ना? National park in Loktak Lake. What is that floating national park called? उसका नाम फुमदीज आर एक्चुअली, हाँ वो आइलैंड्स जो बनते हैं उसको फुमदीज कहते हैं. यस यू आर राइट, बट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट नेशनल पार्क इनसाइड लोकतक लेक? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क. Yes, it is Kabul Lamjao. Yes, Bhavya City, right? हाँ, and it is famous for Fumdis. ठीक है, ठीक है. Let me show. This is Manipur, and what is the capital of Manipur? So the capital of Manipur is Imphal. ठीक है, it is Manipur, Imphal capital. ठीक है, and it is famous for Fumdis. ठीक है, that is what you should know. It has vegetation oil. Okay. I was not aware of vegetation oil, maybe. Okay, let's move on. Now the next question is actually linked with the previous one. Only floating national park. Right answer is option C, Kabul Lamjao National Park. C is the right answer to this question. मणिपुर. ठीक है. Now, Jim Corbett National Park is the first national park that was declared national park in India. Now, in 1936, it was established as Haley's National Park, and now it is called as Jim Corbett National Park. ठीक है. This is what you should be knowing. ठीक है ना. और जिम कॉर्बेट से एक रिवर गुजरती है, राम गंगा रिवर. So there was a proposal to change its name to राम गंगा नेशनल पार्क. एक टाइम पर प्रपोजल आया था. ठीक है, but right now it is called as Jim Corbett National Park. है ना. Now let's move on to the next one. Where do you call the point in the orbit of the moon or a satellite at which it is nearest to the earth? अर्थ के अराउंड एक मून है, लाइक विच इज द नेचुरल सैटेलाइट, है ना. Crazy realistic. Yes, you can watch the previous videos also. But say if you watch from today onward till the CLAT exam, still you will get a lot of benefit. ठीक है. अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो पुराने वीडियोस भी, बट आई वुड सजेस्ट कि आज से ही देखना शुरू करो. दैट विल बी मोर देन एनफ. ठीक है. Yes, nearest is Perigi and farthest is Apogee. ठीक है. देखो, I am sure you must be aware that like moon, this is moon which revolves around earth in an elliptical orbit.
ठीक है, ओके। अब देखो होता क्या है, जैसे आपको स्कूल डेज में पढ़ाया जाता है, सर्किल होता है, सर्किल का एक सेंटर होता है, राइट। सिमिलरली इलिप्स होता है, इलिप्स का दो फोकस होता है, फोकस 1 और फोकस 2। ठीक है, कोई एक पर अर्थ रखा हुआ है और मून, एनी you can consider one of them like as the point where earth is placed. Let's say this is f1, focus 1, this is f2. So if the moon is here, this is the nearest distance, this is called as perigee position. And if moon is at the farthest distance, it is called as apogee position. ठीक है, perigee and apogee position. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। सो अगर perigee पे फुल मून आएगा, सो इट विल बी लार्जर एज कंपेयर टू अगर apogee पे फुल मून आएगा तो। ठीक है, सिमिलरली जिस तरह perigee apogee है, इसी तरह if there is a sun here and the earth is moving like this, let's say this is the earth, so at this position it will be called as perihelion. And if the earth is here, this position for earth will be called as aphelion. Like apogee, perigee, similarly aphelion and perihelion for earth sun relation. And this is the right one, apogee perigee is related with earth and moon. ठीक है, that is what you should be knowing. I hope it is clear. Till now is it clear? समझ में आया? Okay. The next one is which of the following is the largest brackish water lake in India? है ना, ये तो आप बता दोगे होपफुली। The right answer is option B, है ना। So I hope you should be solving this, है ना। Lagoon भी है ये, मतलब ऐसे आएगा और ऐसे मिलेगा, ऐसे like this. This is चिल्का लेक। ठीक है ना, आप देख सकते हो ऐसे, this is actually like this. So lake which actually touches the large water body like ocean or sea. So that type of lake is called as lagoon. लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट के कारण बनता है, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल व्हाट इज लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट, वो हाई लेवल का ज्योग्राफी है, सो यू आर नॉट सपोज्ड टू गो इन दैट मच डिटेल। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट, इस पर एक क्वेश्चन आया था सीयूईटी में, दैट विच आर द फॉलोइंग सिटी ऑन गोदावरी रिवर, एंड द आंसर वाज नासिक, बिकॉज नासिक इन महाराष्ट्र, दिस इज द प्लेस वेयर गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स। और अभी सीयूईटी में एक क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग में दे आस्क अबाउट इट, दैट रिवर और सिटी उनका फेवरेट है, अक्सर पूछते हैं। यस, इज द राइट आंसर, वेरी गुड। हाँ, सो रिवर तो महाराष्ट्र है, दिस इज महाराष्ट्र है ना, यहाँ पे आपको मुंबई मिलेगा। ठीक है, दिस इज नासिक, ओके, एंड दिस इज एक्चुअली गोदावरी रिवर गोइंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये थोड़ा नीचे से जाता होगा, ऐसे जाता होगा लाइक दिस। ठीक है ना, त्रिम्बकेश्वर नासिक से, दिस इज द प्लेस, द सोर्स ऑफ गोदावरी रिवर, इट गोज टू महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, है ना। नेक्स्ट इज गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्हाट, किसका हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर? विच स्टेट, कहां मिलेगा आपको? यस, सी इज द राइट आंसर, अरावली। एंड व्हाई वाज अरावली इन द न्यूज, क्यों न्यूज में था? दिस इज अरावलीज, गुरु शिखर, ये भी माउंट आबू है ना। हाँ, that 100-meter rule and all. Then later on Supreme Court state that, है ना। अच्छा, एक चीज और पूछ रहा हूँ, we are talking about Western and Eastern Ghat. We have seen a previous year question in AILET based on this. The meeting point between these two are called as what? Meeting point of Eastern and Western Ghat, क्या कहते हैं इसको? Yes, नीलगिरी।
ठीक है. And Nilgiri is in ये भी क्वेश्चन आया था in which three states, like it is the junction of which three state. This was also asked. बताइए. This was asked in the exam. Three states: Kerala, Karnataka, Tamil Nadu. Very good. Kerala, Karnataka, Tamil Nadu. And another question that was asked is, I have taught in the paid classes. There's a very famous flower which blossoms every 12 years. यहाँ पे एक फ्लावर उगता है जो हर 12 साल में खिलता है. This was also asked in AILET exam. नीला कुरुंजी. नीला कुरुंजी. Yes. The Western Ghat is there, and Eastern Ghat is Discontinuous. It meets here. है ना? This is Nilgiri Mountains. है ना? Okay. So this is the state of Karnataka. ठीक है, इसके नीचे केरला है, यहाँ पे तमिलनाडु है. ठीक है, दिस इज द प्लेस. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व अंडर मैप प्रोग्राम, अंडर यूनेस्कोस यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मैप प्रोग्राम होता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. अंडर दिस इज द फर्स्ट, है ना, biosphere reserve. When is the next 12-year period cycle? आराध्या प्लीज चेक इट. हमको अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो लिखता है ऐसे ही कि हर 12 साल में ब्लॉसम करता है नीला कुरुंजी. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. अच्छा, एक चीज आप पूछ रहा हूँ, वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट कौन सा है? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, बट जस्ट फॉर रिवीजन. वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक. So Western Ghat and Eastern Ghats are mountain range. Highest peak of Western Ghat. ये बताओ. Then I will ask one more question related with Western Ghat, which is a part of current affairs. यहाँ पे हम केरला में हम नीचे. Highest peak of Western Ghat या highest peak of South India, it is called. Yes, Annai Modi in Kerala. ठीक है. अच्छा, एक और सवाल है. हाँ, there was a person recently who died and under him a committee was set up regarding protection of Western Ghat. Which person I am talking about? He died in January. I have taught in paid classes in detail. एक आदमी थे जिनके अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई थी कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड सजेशन देना था कि कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाए, एटसेट्रा एंड ऑल. यस सर, माधव गाडगिल. he passed away recently, very famous environmentalist. उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई थी, कस्तूरी रंजन कमेटी, फॉर्मर इसरो चेयरमैन, एंड कस्तूरी रंजन वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, है ना. कस्तूरी रंजन सर आल्सो डाइड, आई थिंक लास्ट ईयर. ठीक है. तो ये सब पता होना चाहिए. प्लीज रीड समथिंग अबाउट माधव गाडगिल, इनके बारे में कुछ पढ़िएगा, बिकॉज से क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. सो वी आर स्टॉपिंग दिस क्लास हियर. टुमारो विल बी मीटिंग यू विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, दैट इज ऑस्कर अवार्ड्स at 3 p.m. So please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.